नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉट टॉक पर। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड का फोकस अफगानिस्तान से हटकर सेंट्रल एशिया की तरफ हो गया है, कजाकिस्तान की तरफ हो गया है। और कजाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट हुआ था, एनर्जी प्राइस हाइक हुए थे, एलपीजी के प्राइस हाइक हुए थे। और उस प्रोटेस्ट ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया, वर्ल्ड की सारी बड़ी बड़ी पावर्स उसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। एक बड़ी क्यूब, एक बड़ी पजल सी हो गई है, क्या रीजन है एक साथ कजाकिस्तान में इतना सारा बवंडर कैसे हो गया। तो इसी पजल्स को सॉल्व करने के लिए आज मेरे शो में बेहद ही तीन खास मेहमान हैं, और मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एयर वाइस मार्शल, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयर फोर्स आफ्टर सर्विंग 35 years टू इंडियन एयर फोर्स, एयर वाइस मार्शल प्रणय सिन्हा जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। उसके बाद मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी का, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। उनको लॉजिस्टिक का एक्सपर्ट कहा जाता है, और आए दिन आप लोग उनको टीवी पे देखते होंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते रहते हैं न्यूज मीडिया हाउस के लिए। और मेरे अगले बेहद ही खास गेस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट, व्हाट कैन आई से, इन इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स, डॉक्टर भारत। And he writes a lot of articles for different think tanks across France, Russia, Europe. और 5 साल वो रशिया में रह चुके हैं, 14 years he has been into Israel। तो इसीलिए आज मैंने इन तीनों खास पैनलिस्ट को सिलेक्ट करा है। मिस्टर भारत, डॉक्टर भारत विल लेट अस नो अबाउट कजाकिस्तान। प्रणय सिन्हा जी हमारे चाइना वॉचर कहा जाता है, चाइना में बहुत अच्छा इनका कमांड है। और डॉक्टर जनरल साहब को तो हर कोई जानता है, इनके आर्मी, इनके लॉजिस्टिक एक्सपर्ट के बारे में। तो सर, आपका एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत, बेहद स्वागत, वेलकम। थैंक यू वेरी मच पुष्कर। ओके, सो डॉक्टर भरत, बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन कजाकिस्तान में क्या इश्यूज हैं, कौन कौन सा वर्ल्ड पावर इन्वॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा आप क्या इसका हिस्ट्री के बारे में बताना चाहेंगे कि एक टाइम पे ऑल दीज कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सब रशिया का एक पार्ट हुआ करता था, सोवियत यूनियन जिसे कहा जाता था। तो क्या ऐसा हुआ कि सब अलग हो गए, फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से इनके इश्यूज हो गए? तो थोड़ा सा उसके बारे में आप जानकारी दें बिफोर वी स्टार्ट हिटिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Sure. And first of all, Jai Hind to all my friends, brothers and sisters of India and abroad. And my thanks to you, Pushkar, for inviting me over this beautiful All platform. And it's a great honor to sitting beside the two stalwarts, one from the Army and one from the Air Force, Air Marshal Sir and Kocher Sir as well. It's a real honor indeed. So actually, इस बात को हम लोग पहले लेके चलते हैं 1988 से 1991. This is the tenure when the Soviet Russia started getting broken into pieces. Why it is so? The reason is there are lot many things. इतिहास गवाह है, कोई भी देश इतना दिन तक एक साथ जुट नहीं सकते, क्योंकि अगर वो देश एक अम्ब्रेला जैसा फॉर्मेशन में रहता है, मतलब the Soviet Union was just like an umbrella, and under that lot many countries were tagged together and working under the same command of the Russian proletariats. And that was the consequence, because there was two changes in ideologies. Stalin followed the ideology of Tsar, Lenin followed the ideology of the social workers and the publics. And there was a big fight between the Stalinist ideology and the Leninist ideologies in the later part of the war. And as a result of that, in the future time, when they find that every command and control switch been controlled by the Russian Duma, lot many countries started thinking out of the box. भाई मुझे इनके साथ क्यों काम करना है? I have the best resource, I have the best facilities. Why I have to always listen to the Russian bosses? That is one of the reasons for this economic disintegration, social disintegration, and the poking nose of the Western frontiers. Western friends. That is one of the basic reason for the breakup. And इसके साथ साथ एक ऐसा डमी तैयार हुआ था, जैसे मिखाइल गोर्बाचेव, he introduced the logic of glasnost perestroika, which means the openness of the economy. देखो पुष्कर, एक बात है, दुनिया में जो भी देश अपने इकोनॉमी को ओपन किया है वो खत्म हो चुका है, like China.
द ओरिजिनल चाइना जो था पहले, उसका अगर इकोनॉमी देखा जाए, बाहर के लोगों को मालूम नहीं था कि चाइना दीवार के अंदर में क्या कर रहा है. Similarly, the Western people used to fear Russia, Soviet Russia, because as long they were not open their economy, but they have to fall into the line with the Americans to run their business. This is not a matter of power politics, which is also there. I think Kocher sir and sir also, AVM sir also agree with me on the same policy. Okay, Sure. and that is the point. The Sure, breakup sure. of the Russia. Sure, Dr. Bharat, exactly makes sense. So, एयर वाइस मार्शल सर, आपकी ओपिनियन, आपका इसमें क्या विचार है? What do you think? First of all, good morning to your viewers, and thanks Pushpa for inviting me. It's my pleasure. अच्छा, विचार मतलब ये जो कजाकिस्तान का जो इश्यू है, of course, the good news is that protest has been शांत हो गया है, and 2-3 घंटे के अंदर जैसे 7 बजेगा कजाकिस्तान में नूर सुल्तान या अस्ताना से the curfew will be removed, and that is the news. So ये 10 दिन का जो प्रोटेस्ट था, that has been शांत कर दिया गया. Now let us see, इसमें 2-3 इसमें बहुत से layered हैं. Why it has happened? See, the original thinking which you said in your starting point कि price rise of LPG, ठीक है? And Kazakhstan is a landlocked country, नवा बड़ा देश है, and it's a very big country and very rich. 40% uranium is there, a lot of oil and gas is there. And please remember, it has, as Dr. Bharat said, after this opening up, they all started aligning with the Western interest. And there is a Chevron, there is a Exxon, there is a Mobil. All these big, large US companies are sitting right near the Caspian Sea in the western side of the Kazakhstan. और इनके बहुत जबरदस्त tens and thousands of dollars, $1 million, $1 billion they have invested here. So please understand the interest is there of US and allied forces and of UK and Western Europe. All these people have got a lot of interest in Kazakhstan. And China also. China takes maximum minerals यहाँ से uranium लेता है, gas उसको यहीं से सबसे ज़्यादा मिलता है. So everybody have got a lot of interest in it. And by the way, the people, you must have invested in Bitcoin. Bitcoin वाले को भी ये देश बहुत प्यारा है. I will tell you why. Okay. So this country is that way very minerally and economic resource wise very rich. But at the same time, the people, the average people are minimum wages is $100 per month. And this, and the moment and average wages is $500. Okay. So the moment this price rise was there was a protest. कि ये rise क्यों हुआ? This is the first reason. Second reason is inequalities. हुआ क्या है कि this was, as Dr. Bharat said, after 91, this country was being ruled by one authoritarian, what you can say, communist, ex-communist leader, Nur Sultan Nazarbayev. And he ruled for 3 decades. 30 साल तक उन्होंने किया और 3 साल पहले he handed over to the present Qasim Tokayev. Sir, yes, sir. Sir, yes. It was Tokayev for 30 years. Then Tokayev. Nur Sultan Nazarbayev तो अभी है. You said the other way. नहीं. This is Nazarbayev. No, I'm right. You just check it, Dr. Bharat. Nazarbayev was for 30 years and Qasim has come recent. Qasim is the recent president, Qasim Tokayev, and Nazarbayev, and not only Nazarbayev ने क्या किया कि ये 30 साल तक रहा. He was an ex-Russian communist, and this chap minted, मतलब पैसा सबने बनाया, पर in fact the whole Kazakhstan का 60% of wealth is with 152 people, elite people.
and most of the family members of Nazarbayev. उसकी लड़की है, उसके दोनों लड़कियां, one ladki has got lot of share in the Kazak bank. So what I am saying, this inequality was visible. और today the internet के जमाने में you can see कि भाई एक elite है, जो bureaucrat है, जो गवर्नमेंट में है, उसकी तनख्वाह, उसका शान शौकत, और एक आम आदमी. So this inequality is the second reason. The third reason is the internal politics. अब हुआ क्या है, Nazarbayev जब 3 साल पहले he gave to the Qasim still was not able to run it freely because Nazarbayev was head of the security forces and he still controlled everything. The bureaucrat, the elite, उसी के चमचे थे. The security head was his चमचा. So हुआ क्या है कि, and Nazarbayev somehow he had got aligned to the Western Jaga. So Russia internal dynamics was the Russian also wanted to tell the world, listen, you can't take Kazakh out of me. There is a 1 लाख की फौज यूक्रेन में खड़ी है today and tomorrow, and the discussion of Russia and America is going on for Ukraine. There was a signaling from this chap Putin saying, listen, don't underestimate us. And that's why the moment this internal dynamics took place, he must have indicated Qasim, and Qasim asked for CSTO. ठीक है, उनके CSTO is that they went, and 2000, and this is of the ex-Soviet bloc, Armenia and other Kyrgyzstan and Kazakhstan and all this. तो इनकी फौज है 2000. This is called peacekeeping force or equivalent to NATO. Okay, तो इन्होंने भेज दिया, and they have quelled up. इसमें एक दो और dynamics play किया. Here, when this whole thing was going on, their US people also, their Open Society Foundation, George Soros type के लोगों का, and they also tried to, इसमें अपना तवा गरम है रोटी सेंक ले type. They also went into it. And the most dangerous thing which happened was terrorists from Afghanistan, Pakistan, terrorists from this thing, they thought कि अब ये भी सोचे कि भैया, after all these are all Muslim countries, but they are very liberal Muslim countries, very progressive Muslim countries, unlike the Wahhabis and unlike the Salafis, unlike the Saudis. Okay, this type of. So, but these people said कि यार मुस्लिम है, चलो हम अपना झंडा वहां भी गाड़ दें. So here the Chinese interest came in between. Chinese said कि Baba, if these people have come, then it is more dangerous. So they also alerted. Russia also alerted. In fact, China said that this is going to be a color revolution. Okay? So okay. So these are the main dynamics which played. But luckily, and Qasim Saab has listened to the protesters. He has बर्खास्त कर दिया कैबिनेट को. He removed Nazarbayev from the all the forces. Nazarbayev को भागना पड़ेगा. He has taken all the family members से जितने plum posts थे, he has taken out. Also, he has sacked the security advisor, जो उसका खास चमचा था. So now control has been taken over, and probably अब ये शांत हो गया. हाँ जी सर, अभी आपने ना कलर रेवोल्यूशन का जिक्र किया, तो मैं अभी आपके पास एयर वाइस मार्शल साहब आऊंगा. उससे पहले मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा जनरल साहब से, मेजर जनरल कोचर जी से. सर, अभी एयर वाइस मार्शल साहब ने जिक्र किया पीस कीपिंग फोर्स जो पुतिन ने भेजी है, रशिया ने भेजी है कजाकिस्तान में. तो जनरल साहब, ये पीस कीपिंग जो फोर्स होती है वो बेसिकली होती क्या है, करती क्या है, और दूसरे कंट्री से कजाकिस्तान में आकर इनका रोल क्या है? तो आप इसमें अपनी ओपिनियन देंगे, या रशिया का पुतिन का कोई और इंटेंशन है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, ये पीस कीपिंग फोर्स जो बनाई थी 2002 के आसपास, और 6 इसमें नेशंस को इंक्लूड किया गया था उस टाइम पे. रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये बेसिकली जैसे एक मिलिट्री अलायंस होता है, जब भी कोई सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किसी भी एक देश की इनमें से थ्रेटन होती है, तो ये 6 देश कलेक्टिवली वॉलंटरली सबको एग्री होना चाहिए, डिसाइड करते हैं कि अपनी एक पीस कीपिंग फोर्स जो इन लोगों ने बनाई है, which is approximately around 8 to 10,000 troops, वो वहां पे भेजी जाती। फॉर एग्जाम्पल कजाकिस्तान में ये ताजिकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल जब ये अफगानिस्तान की प्रॉब्लम हुई थी और इतने रेफ्यूजीज पहुंच गए थे ताजिकिस्तान में, और उस टाइम पे 4,000 ट्रुप्स भेजे गए। ये इतनी न्यूज में नहीं आया उस टाइम पे, क्योंकि ये बेसिकली वहां पे रेफ्यूजी कंट्रोल और ये जो टेररिज्म, जो टेररिस्ट अंदर आ गए थे, इनको कंट्रोल करने के लिए था। तो अभी ये जो CSTO है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट में ये वहां पे पहुंच जाएगी। फॉर एग्जांपल आर्मेनिया में, बिकॉज आर्मेनिया भी इसका एक हिस्सा है, जब अजरबैजान ने अपने अटैक्स लॉन्च किए थे आर्मेनिया में, तो ये CSTO आर्मेनिया के रिक्वेस्ट के बावजूद वहां पे पहुंची नहीं, बिकॉज इसमें आप पूरी अगर जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो में देखेंगे तो रशिया का इंटरेस्ट अजरबैजान में भी है। और इंटरेस्टिंगली आर्मेनिया जो है प्रेसिडेंट है इस ब्लॉक का। हाँ, तो ये प्रेसिडेंट रोटेट होते रहते हैं। आई मीन एज ऑफ नाउ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी जो प्रेसिडेंसी है हर एक 2 साल में बदली होती है। हाँ, तो वो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है प्रेसिडेंट वहां पे होना। तो ये आर्मेनिया में क्यों नहीं गए? बिकॉज इसमें रशिया का इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज रशिया अजरबैजान को भी मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है। T-72 जो टैंक है इनका, रशिया का जो T-72 टैंक है, वो अजरबैजान की फौज के पास भी है और आर्मेनिया की फौज के पास भी। और जो इनके मिग सीरीज के जो फाइटर प्लेन्स हैं, वो दोनों एयरफोर्स के पास है। तो इसीलिए इसमें इसको रशिया का इंटरेस्ट नहीं है। और इस ट्रीटी का जो आर्टिकल 4 है, जो इस ट्रीटी का, वो ऑथराइज करता है ये पीस कीपिंग फोर्स को वहां पे ले जाने के लिए। और फौज के अलावा इनके अप्रोक्सीमेटली 10,000 ट्रुप्स हैं इसमें। 70 इनके पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स भी। ओके। और बेसिकली पैराट्रूपर्स और स्पेशल फोर्सेस की ये टीम है। एक स्पेशलाइज्ड, एक नॉर्मल फौज नहीं है, एक स्पेशलाइज्ड फौज है। जैसे कि हम लोग अपने इंडियन आर्मी भी अपने पीस कीपिंग फोर्सेस में यूनाइटेड नेशंस में भेजती है, तो हम अपने स्पेशलाइज्ड अपने ट्रुप्स भी उसमें शामिल करते हैं। बिल्कुल। तो सिमिलरली पुलिसिंग ड्यूटीज हो गई, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना हो गया। बेसिकली ये एक ऑक्यूपेशन फोर्स नहीं है। आप इसको मान के चलिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टेटमेंट उनके दिया है कि रशिया का अगर ट्रूप्स एक कंट्री में अगर चले जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं। ये स्टेटमेंट को आप उस नजरिए से मत देखिए, बिकॉज बेसिकली ये एक
पीस कीपिंग फोर्स है, जो भी डिस्टर्बेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसको ये कंट्रोल करती है। दूसरा, एक जियो पॉलिटिकल नजरिए से अगर आप अभी जो एयर मार्शल साहब ने और डॉक्टर भरत साहब ने अभी जो स्टेट किया है, अगर हम ताजिकिस्तान को, इसको कजाकिस्तान को एक जियो पॉलिटिकल एंगल से देखें तो रशिया उसके नॉर्थ और वेस्ट में है, और जो उसका लैंड बॉर्डर है रशिया का वो 6,846 किलोमीटर, और 19% जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो रशियन एथनिसिटी की है। तो आप मान सकते हैं कि रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कजाकिस्तान में प्रॉब्लम, और वो हमेशा इंटरवीन करे। बिल्कुल सर। दूसरा प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर है चाइना, जो कि ईस्ट में है और 1533 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है। जैसे एयर मार्शल साहब ने बताया कि चाइना का प्योरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कजाकिस्तान, और इसीलिए चाइना की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अभी आपने जो चाइना के फॉरेन स्पोक्समैन की स्टेटमेंट आई है, वो उसमें चाइना ने सपोर्ट किया रशिया के एक्शन, बिकॉज चाइना नहीं चाहता कि ये डिस्टर्बेंस बढ़ जाए, और इसीलिए एक गार्डेड स्टेटमेंट चाइना ने इसको दिया है जिसमें उसने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। तीसरा, अगर आप ये मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि अगर आप ये जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, अगर आप इनको देखेंगे कि ये नाम के लिए डेमोक्रेसी है, पेपर पे डेमोक्रेसी है, एग्जैक्टली, बट दे आर रूल्ड बाय ऑथोरिटेरियन डिक्टेटर्स। बिल्कुल सर। और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहीं भी इकोनॉमिक ग्रोथ या आगे आपको बढ़ना है तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही आपको सक्सेस दे सकती है। लोगों को अगर आप अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, मैं आपको एक भविष्यवाणी दे दूं कि आने वाले वक्त में चाइना में भी ये प्रॉब्लम आने वाली। ऑलरेडी चाइना में अनरेस्ट स्टार्ट हो चुका है, और आप देखेंगे कि 5 और 7 साल के बीच में चाइना में भी जिस हिसाब से जी जिनपिंग अपना काम कर रहा है, वहां पे भी अनरेस्ट अपना होने वाला है। बिल्कुल सही। और लास्ट पॉइंट ये है कि 70% कजाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन, 26% क्रिश्चियन पॉपुलेशन। तो ये दो एथनिसिटीज हैं जो मेजॉरिटी है उस कंट्री में, और तालिबान के आने से अफगानिस्तान में एक हवा फैल गई है कि बहुत आसानी से मुस्लिम्स जो है और जो फंडामेंटलिस्ट है वो एक कंट्री को टेक ओवर कर सकते हैं। अफगानिस्तान एक आपका एग्जांपल। हाँ जी, हाँ और जी। इसीलिए रशिया नहीं चाहता है कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा मिले सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, और इसीलिए ये आपकी ट्रीटी बनी है CSTO, वो इसीलिए बनी है कि जहां पर भी रशिया को लगे, और इसको रशिया, आपको मैं बता दूं कि ये जो फोर्स है उसका 50% बजट रशिया फाइनेंस करता है। और इसीलिए रशिया
ये जो CSTO को डिक्टेट करेगा। बिल्कुल सर, जो बिल्कुल। रशिया चाहेगा वही CSTO करेगा। और ये फोर्स ऐसे अपने बनाई गई। अभी ये इस कजाकिस्तान में रशिया के अलावा तो बेलारूस के सोल्जर्स भी आए थे। स्पेशल फोर्सेस जो थी बेलारूस की, ये उसके भी सोल्जर्स आए थे इंटरवीन करने के लिए। तो आप जान सकते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है CSTO, ये किस लिए बना। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 ठीक कहा सर आपने। बाकी अब हमारे पास वक्त का अभाव है, लेकिन आई वुड लाइक टू गो फॉर 2 क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एयर वाइस मार्शल साहब आपसे फरमाऊंगा, आपने कहा था कि कलर रेवोल्यूशन है, तो कलर रेवोल्यूशन के बारे में सर आप बताएंगे कि कलर रेवोल्यूशन क्या है, कहां से ट्रिगर हुआ, और एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं कलर रेवोल्यूशन के लिए। बिफोर आई प्रोसीड विद डॉक्टर भरत, आपके सर कमेंट्स, ओपिनियन ऑन कलर रेवोल्यूशन। Pushpa, as Kochar sir said, that China made a statement. China made a very specific statement that they fear this is color revolution, and of course, and they also made a statement. They were also fear of this fundamentalist rising, because fundamentalist rising can affect Xinjiang, and in Russia it can affect Chechnya. Okay, so these are the countries where it can affect. So they both are very much fundamentally against any radical Islam coming near to their borders. That is one part. Color revolution is basically a revolution which actually take place because of the protest of the country. And this protest is now mostly we have seen in the countries which has been of Soviet blocs, which has been a dictatorship ruling. These countries, they have undergone, as Dr. Bharat said in his mark, they have underwent a economical change and the regime change. And this change has taken place almost all over the Eastern, the Russian bloc and the dictators of the erstwhile or even the imperialist forces. So whenever this thing happened, this was known as, this has been named as a color revolution. I will just tell you 2-3 interesting color revolution के बारे में बता रहा हूँ तुमको। सबसे interesting हुआ, हाँ, सबसे interesting है for the Soviet side से, यूक्रेन में 2004 में जो revolution हुआ, that is known as Orange Revolution. The Georgia में it is known as the Rose Revolution. Kyrgyzstan में it is in 2005 it is known as Tulip Revolution. Yugoslavia में 2000 हुआ, लेबनान में Cedar Revolution. What I am saying is, इसका propounder है Mr. Gene Sharp. Now this Gene Sharp, he is a political thinker. अब ये सब बैठ के क्या करते हैं? They have devised, and now what I am going to tell you is very 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 alarming, because he has propounded a theory stating that कैसे आप एक किसी डिक्टेटरशिप को हटा सकते हैं, डेमोक्रेसी ला सकते हैं. नॉट ओनली दैट, किसी भी प्रोटेस्ट को कैसे आप उसको प्रोटेस्ट को अंदर घुस के यू कैन मेक द स्कोप बिगर and you can do your gameplay. So now what he has suggested, I will just tell you, he suggested very interesting thing. I just, let me open this figure to he said 5 phases. He said पहले crisis में घुसो, and this Gene Sharp is very much influenced by Mahatma Gandhi, because what he writes, he has written a book on from dictatorship to democracy. Non-violent method बताता है, पर बताता है सत्ता को हथियाने की बात करता है. So he is saying crisis जब हो तो उसमें आप डाउट डाल दो, उसमें you build up narrative, fake narrative, maintain pressure, then chaos, confusion दूर करो, and then तुम घुस जाओ, अपने logos, अपना सब चीज डालो, and then the whole narrative changes. What was afraid in this when the whole thing started, हुआ तो price rise के लिए था कजाकिस्तान में, okay, but when these people went,
they thought कि now it will be a great revolution जिसमें Qasim also will be thrown out and there may be democracy. Neither China nor Russia wants democracy anywhere near their border. And interestingly, all this organization has got Dr. Bharat. It has got connection of Dr. Bharat's friend George Soros. George Soros gets connected in all these people. He funds. His NGOs are there. And by the way, this is what we were saying in India also when the Shaheen Bagh took place, or when the farmer protests take place. Farmer protests take place. Then the other people, the other interested people in the name of Khalistan liberation, but there is no Khalistan liberation is one front. But then the pumping is there, pump money there. George Soros, his Open Society Foundation, जहां आपके यहाँ पे मंदर और हर्ष बंदर टाइप लोग हैं, who get into this whole gambit and fund the people, and the whole agitation is hijacked. Agitation gets hijacked. Instead of the farmers का हित की बात करेंगे सत्ता बदलने की बात, सरकार को हटाओ. So this is the color revolution. Your viewers can go look into the Wikipedia color revolution. They will find a lot of countries. Even Burma mein saffron color revolution hua. So this name the name is just selected, chosen. Jeans denim revolution hua. So all this has been name has been chosen, but all interested isme, and US is funding. It is a known CIA overt covert funds. So CIA one taraf, it is just like a Cold War. US has got its own lobby, and Russia maintains the bloc. But Russia now is out. Only it has control over this thing. And as General Saab said, Belarus, see, Lukashenko has been saved because of Putin only. He still has been saved. And Belarus is the member of CSTO. Belarus is the member of CSTO. Putin only, Russia lost only Ukraine. And that's why he wants to take revenge. He maintained Kyrgyzstan, he maintained, of course, he lost Armenia in that way, but still the influence Armenia and Azerbaijan is there. Of course, Turkey is the new player. Before you start me the question, sure. I just want to add 1, 2, 3 points over here. Sure. देखो ऐसा है कि जैसे कोचर सर ने बताया और अपने एवीएम सर ने बताया, basically in one liner, the color revolution is basically the revolution of the working class. Simple and straight. Color revolution का बहुत सारे variations थे. जैसे अगर military points of view से देखा जाए, so 2003 में जॉर्जिया में हुआ था, then 2003 में जॉर्जिया में हुआ था, जो उसको कहा जाता था रोज रेवोल्यूशन. उसके बाद आपका हुआ 2005 में जिसको कहा जाता है ट्यूलिप रेवोल्यूशन, सॉरी ट्यूलिप रेवोल्यूशन एंड ऑरेंज रेवोल्यूशन, एंड देन इन Kyrgyzstan Ukraine is orange. Ukraine is orange and tulip is Kyrgyzstan. Yes, tulip is Kyrgyzstan. And इराक में हुआ था सर, इराक में हुआ था जिसको पर्पल रेवोल्यूशन कहा जाता है. तो ग्रेप रेवोल्यूशन इंडिया में भी हुआ है पुष्कर. Yes, इंडिया में हुआ है व्हाइट रेवोल्यूशन बाय द अमूल का जो मिल्क है. That is also a part of the revolution of the working class. But that was for the constructive relationship and to construct a country and for the betterment of the country. और ये जो हुआ था ये constructive. एक मिनट here. See, what Dr. Bharat is saying, we should not mix the two revolution. Color revolution India में जो करते हैं, it is totally. We have got green revolution, we have got white revolution, we have got brown revolution leather के लिए, we have got lot of gold revolution oil के लिए. So India color revolution is something else. When international forum में, this is for the totally for protest. India में we are using it constructively this for this thing. So there are for India also color revolution. You will see lot of things. You will find leather के लिए brown. You will find golden, you will find many colors. So that is, but we should not get confused with this. This is totally for the protest of the people and funded
purely funded, where this funding comes from the US, and it has gone revolution in Bolivia, Belarus, Lebanon, Armenia, Macedonia, सब जगह. Snow revolution happened in Russia, even in China. Absolutely, they are sir. calling, Absolutely, I agree with you completely. In China they are calling it Jasmine revolution. Fail हो गया, ठीक है. And Tiananmen Square में भी they wanted to revolution. So there are forces led by CIA and this thing who wants to do some revolution, change of the regime. उनका aim है, उनको fund मिलता है. And but nowadays, earlier they were doing on the dictatorship, but nowadays this Open Society Foundation is trying to bring liberal and progressive democracy. So democracy like India, they are eyeing, and उनको मौका मिले तो इसको भी गिराने की कोशिश में है. That is बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. So मेरा next question. Pushkar, taking the point of sir, what sir said, latest intelligence report कहते हैं कि in the last December, किर्गिस्तान में similar type of organize किया गया था. That has been thwarted by the Kyrgyz authorities under the direct information from the Russian Soviet FSB, the Russian FSB. अभी मजेदार बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर एक ग्रुप को आइडियलाइज किया गया है, जैसे सर पहले वाला बात में बताया था, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ऑफ सोरस. सी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ऑफ सोरस हैज अ ऑफिस इन लंडन एंड एज वेल एज इन इस्तांबुल. They were the organization, along with the hand of CIA, dirty work they were doing to crush these entire countries, to take the fuel and to sell it to China. Try to understand, this is a very good relationship. And another important part, being sir is an expert on China, I would also like to add that what China is doing a very beautiful diplomacy. क्या हो रहा है? रशिया के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं, बड़े भाई मैं एकदम अच्छा बच्चा हूँ. Or in the background, China is trying to create internal disturbances in every country, because China को दो चीज से importance है. एक है, the sir has said, the amount of resources. जैसे कोचा सर भी बोल रहे थे कि amount of resources in Kazakhstan, and most importantly, Pushkar, we should not forget about it. Apart from all these resources, the most valuable but artificial resource in Kazakhstan is the Soviet era biopreparatory laboratories of the bioweapon center. That's a Stepnogorsk in Kazakhstan. दुनिया के सबसे बड़ा bioweapon laboratory है जो बंद किया गया था. Last year I have tipped out in Twitter as well कि lot many bioweapons has been stolen from that place. और उसका एक टेस्टिंग हुआ था. एक काजाख्स्तान में हुआ था, एक मंगोलिया में हुआ था. There was in the month of January and in the month of April, there was 2 outbreaks, one in Kazakhstan and one in Mongolia. Both the outbreaks were on anthrax. I'm talking about 2021 का बात कर रहा हूँ. So you have to understand, Russia तो एकदम basically अच्छा लोग है. Russia is basically a good boy, but the main bad boy who's putting Russia's face in front is China. You have to understand, because China is getting the benefits of the bioweapons. Okay, that's true. So my next question to Dr. Bharat, that nowadays we can see US is very much weak leadership, and this weak leadership basically is trying to stop Russia in Kazakhstan, in Ukraine, and also coming up very soon in Lithuania. So what's your opinion? Would you think that US will be able to stop Russia interfering, or I should say taking care of his geostrategic interest in Ukraine, Kazakhstan? आपको क्या लगता है? देखो पुष्कर, एक बात है, मतलब सर, both of the great generals will understand and agree with me कि always India had, मैं इसके example India से दे रहा हूँ, always India have the strength and the decorum of following the diplomacy in the best way. Always India always done it in the best possible way. US का आदत है कि to poke nose in everyone's business. That is their way. Because US is not a country, it's a marketing agency. You have to understand from that platform. US has never been a country. India is a country, Russia is a country, but US never been a country. US is a marketing agency. उसका काम है कि जहां से मेरा बेनिफिट आता है, मैं 10 रुपया देता हूं तो मुझे अगर 100 रुपया का मुनाफा होता है, that's selling my own stuff. So that is the best part of it. And US
has nothing to do with Lithuania, but CIA has. See, the entire US administration is very confused state of mind right now. Biden is the close ally of Xi Jinping, sorry. And Xi Jinping is, as I said a few minutes back, he good boy and bad boy, Russia or China. Matlab, China is saying in front of Russia that I am a good boy, but she is pressuring Joe Biden to work the dirty work on her behalf. And that is a fact is happening. I tell you something, till today, Indian Army and Indian Air Force and in Indian Navy, they got the best military machines from Soviet Russia as well as from present Russia. Agar dekha jaye, from technical point of view, American machineries cannot stand because in terms of quality. But हाँ, Soviet machines है, उसको थोड़ा सा maintain करना पड़ता है, maintenance ज़्यादा होता है इसमें, compared to the American machineries. But till date, because my sir is there, Kocha sir is there, these people will be the right people to agree with that. How durable, how tangible these materials are. See, we have to understand from every aspect. Lithuania, they cannot break because already Putin is putting his stand over there, so they cannot do it. Okay, they try to do in Belarus, they stopped. They've been stopped and kicked out. Ukraine ka funda alag hai. You see, the problem is the moment Russia brings the Black Sea fleet over there, Ukraine will be a good bacha in front of Russia again. Abhi too much of interference of this Soros and CIA and Biden, because Biden not thinking from his head. Had he have ever thought of his military advisors, he shouldn't be taking this mess, because otherwise it will go back to Biden, because Biden needs the money now. The money they have given to these foreign countries, like Exxon Mobil, just sir said, and shale companies, जो है वहाँ पर, उनसे पैसा निचोड़ना है उन्हें, because they need money. America is completely draining out, brother. America is draining out. Economy is going down of America. America needs money now. And Russia is growing, but Russia's growth is a very slow pace. Why? Because India is supporting Russia. The geopolitics is not stick to US and Russia now. The geopolitics has changed its flavor. It is now very much India and China constant. I believe that both the sirs will agree with me on that. Yeah. Because that is the flavor. So thank you. So we have to understand from that perspective. बिल्कुल सर, बिल्कुल. सो मैं अपने कंक्लूडिंग कमेंट्स अपने गेस्ट से लेना चाहूंगा बिफोर वी एंड अप रैप अप आवर डिस्कशन. सो जनरल कोशर सर, आपको क्या लगता है कि कजाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो रेगुलेशन चल रहा है सो कॉल्ड, अब ये खत्म होने वाला है, खत्म हो गया है और वी आर डन नाउ? आपको क्या लगता है सर, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स? देखिए, डॉक्टर भरत Vice Marshal have very rightly analyzed the whole situation. This is only a temporary impasse. Till you strike at the grassroots of the problem. कोई भी अगर आप प्रॉब्लम को अगर उसको रिमूव अपना करना है तो उसके ग्रास रूट्स के ऊपर जाना चाहिए, रूट से उसको निकालना चाहिए. नाउ growing inequality in the masses, concentration of wealth among the elites, and let me tell you, Kazakhstan, among the entire Central Asian republics, contributes almost 60% of the GDP. It is a mother goose, and that is why United States, China, because it is so much rich in all your mineral resources, oil and gas especially. Copper is there, uranium is there, metals are there, gold is there. See, all these mining, etc., it is extremely rich, and it has an access from the Caspian Sea. Though it is a landlocked country, but on one side is the Caspian Sea, so trade routes are there. We have missed out the Belt Road Initiative of China. So why China is there? Because China wants a route, and Kazakhstan
presents a very important route as far as the Belt Road Initiative is concerned. तो इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये आपने आज तो बंद कर दिए, अपनी फौज भेज दी और उनको आपने वापस कर दिया, but there will be it's like a, I'll say it's like a wake-up call. Okay, great. It is a wake-up call for the leaders of Kazakhstan that they have to reformulate their policies in the larger interest of the people. अगर हमको पीस चाहिए इस एरिया में, तो हमको एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की इसको जरूरत पड़ेगी, हमको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी. Are the leaders preparing for this change is the most important answer. बिल्कुल सर, बिल्कुल. Very well said, sir. और एवीएम साहब, आपके conclude comments, final comments. I will just take 5 minutes because I have to go 10:30 मुझे निकलना है. ठीक है सर. I will just take 2 minutes. What General Saab said, all the regime of this dictators, the lesson they have to learn is that they have to become not a very democracy, but at least looks like democracy. That means the people have to be given freedom, because today people are much aware. Please, in this days of internet, all people are interconnected. So people are well aware. So what happens in China is known in Kazak. They use the WeChat, Weibo, okay? And what happens in Russia is known. What happens in US is also known. So people are much aware. The aspiration of the people has to be taken care of by the local leaders. If you don't change your government as per the local populace, their aspiration, you will be doomed to be destroyed and disrupted. This is what is going to happen. अगर आप जनता की नहीं सुनेंगे, जनता जनार्दन है, और जनता की नहीं सुनेंगे, जनता आपको हटा देगी. कैसे हटाएगी? Whether it's a bloody revolution, but the fear is when this revolution takes place, then the Western countries' interest also plays a dynamics, and that dynamic was being tried out here. Can be a radical Islamism, can be a very dictatorial type of government, or can be a very, very capitalist type of government which wants to use as a market. What Dr. Bharat said, US is a market, is right. If you become pure capitalist, then the haves and have-nots again will there will be wide gap between these two. Okay? So this is what you have to change as per your local population basis. Exactly, thank you. Exactly. So once again, sir, thank you. Thanks to everyone for coming and sharing your thoughts, your opinion. It was great, nice talking to each and everyone. So once again, sir, thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure.